Science College of Bangalore. And this matter has 3 states: solid, liquid, and gaseous one. So gaseous state we are discussing 11th standard, solid state we are discussing 12th standard, and the liquid state we have to discuss here in the higher studies. We also seen what are the solids. We have some properties of the solid, as well as we have some properties of the liquid, as well as we have some properties of the gases. So these properties are easier to recall when we compare solid, liquid, and gaseous one. So we have seen solids are the substances which have a definite shape and definite volume. Solids has the substances in which particles are closely stressed because interparticle force of attractions are strongest. Thermal energy in case of solid is the lowest. Solids do not flow. Solids are non-compressible, and the motion of the particles of which solid is made up of, these motions are restricted motions, and that's why very few motions are possible, as like pitch vibrations. Translational rotations motions are simply impossible in case of solids. That is what we have seen yesterday. Also, we have seen the properties of liquid and gases too again. Then we have seen solids are classified mainly into 2 categories. So number 1 category is nothing but you can say crystalline solids, and number 2 category is nothing but amorphous solids. So solids are mainly classified into crystalline solids and amorphous solids. What are the crystalline solids? These are the homogeneous solids in which constituent particles are arranged. Constituent particles are arranged in a definite repeating order. So these are the solids in which particles are arranged in a definite repeating order, a long range order. उसी तरीके से arrangement particles का repeated होता है crystalline solids के अंदर. Or when we talk about this amorphous solids, the constituent particles are arranged randomly, not in a definite order. So here, particles are not arranged in a definite order, and these are called, you can say, amorphous substances. Where we talk, these substances are called, you can say, crystalline substances or crystalline solids. So that is what we have seen. This is the difference what we have seen here. While we are going further ahead, we have seen the examples of amorphous solids: glass, plastic, rubber, wax, gum, polymer. These are the different examples of amorphous solids what we can have here. Whereas when we talk about crystalline solids, ice, salt, then sugar, alum, quartz, these are the different examples of crystalline solids what we can have here. So we have seen examples of crystalline solid too again. Also, we have seen there are some properties of the crystalline solid and comparative properties of the amorphous solids too again. So what are the properties of crystalline solids? तो सबसे पहला जो हमने definition देखा था वही properties आता है. Crystalline solids में particles are arranged in a definite order, long range order. Repeat. Then the melting points and boiling points of crystalline solids are very sharp. They have sharp melting points and boiling points. Then we can say this crystalline solids are sharp edges होते हैं, and particles are orderly arranged. So this is what we have seen regarding the crystalline solids. When it comes to amorphous solids, then we can say in case of amorphous solids, particles are not orderly arranged. We know very well. Already it's written not orderly arranged. Then melting points and boiling points are not as sharp because they melt or boil over a range of temperature. That is very important. That is the thing. And they do not have sharp edges. So these are the properties of amorphous solids of we are familiar. Clear with this? So मुझे लगता है कल तक के लेक्चर में यहाँ तक डिस्कस किया था. अभी हमें आगे चलना है थोड़ा सा. There are some of the properties which are shown by this amorphous solids or crystalline solids. उसमें से 2 प्रॉपर्टीज आते हैं. एक आता है आइसोट्रॉपी और एक आता है एनाइसोट्रॉपी. There are 2 properties. अब देखिएगा. So one property is isotropy and दूसरा, that is you can say anisotropy. Okay. So what is this isotropy? What is this anisotropy? That is what we will discuss here. So I will first discuss the crystalline solids. Crystalline solid का definition हम जानते हैं. Particles are arranged in an orderly manner. Particles are arranged in orderly manner. Suppose crystalline substance is made up of AB. So this is the A substance, this is B substance, A substance, and B substance. So this is the arrangement on x-axis: A, B, A, B. यहाँ पे B आएगा, here again A, here again B, here again A आएगा. यहाँ पे वापस A आएगा, B, B, A आएगा. यहाँ पे वापस B, here A, here B, and here वापस A आएगा. Like so, this is the arrangement. So माना कि हमने ये हमारा
crystalline solid है. This is the structure of crystalline solid. So particles are orderly arranged, alternately. A, B, A, B, B, A, B, A, like this. So every A is surrounded by B and every B is surrounded by A. Each type of arrangement of this kind of. This is the orderly arrangement. So this is the crystalline solids in which particles are orderly arranged. Suppose there are some properties as like refractive index. These are the properties when we measure. So whenever we measure such a properties, suppose we measure this here in this direction, and we measure here in this direction. This is X direction, this is the Y direction. So होता क्या है? Particles are orderly arranged. Particles are orderly arranged, and that's why when property each direction में measure करेंगे तो BAB आ रहा है, each direction measure करेंगे ABAB आ रहा है. So that's why property measured in X direction has a different value. Property measured in Y direction has a different value. So whenever a properties like refractive index are measured in different directions, it shows different value because particles are different order. अगर हम ऐसा measure करते हैं, this is again here, यहाँ पे, तो ये अलग direction, तो यहाँ पे B आ रहा है सारी, ये यहाँ पे कहीं आ नहीं है. So इस direction में अलग value आता है, इस direction में अलग आता है, इस direction में अलग आता है. मतलब crystalline solid जैसे होते हैं, उनके अंदर कुछ property के values, magnitudes अलग-अलग direction में अलग-अलग आते हैं. So we get different value when measured in different directions, and that property is called as anisotropy, which is shown by crystalline solid. So crystalline solid shows the property of anisotropy. That means it is the tendency or capacity of these crystalline solids to give different value for a different property or property measured in different direction. So the magnitude of the property changes when direction changes. This is called as anisotropy, and this is only shown by crystalline solid. Whereas isotropy एक अलग होता है. Isotropy में देखिए अब यहाँ पे क्या होगा? There is no such order. Suppose this is A, this is A, this is B. This is वापस हो सकता है A. This is B, this is A, this is वापस B, this is B. यहाँ पे वापस A, यहाँ पे B, B, B. So यहाँ पे particles are not orderly arranged. कहीं भी A आता है, कहीं भी B आता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है. तो आप ऐसे भी मेजर करो तो पार्टिकल वैसे आते हैं, ऐसे भी मेजर करो तो पार्टिकल वैसे आते हैं, ऐसे भी मेजर करो पार्टिकल वैसे आते हैं. So in that sense, होता क्या है? You measure property in any of the direction, you will get the same magnitude. So whenever we get the same magnitude, but this substance do not change the property in different direction. This is the property, or you can say capacity of this substance. When the same property is measured in different direction, has the same value, then that is called an isotropy. Okay, so this you can say isotropy. So this is what we can say. So amorphous substances show the isotropy, and crystalline substances shows the anisotropy. This is a very important thing again, what we can differentiate. Isotropy is the value of some physical property remains same when measured in different directions. That is isotropy. And when value of some physical property differs in when measured in different directions, that is called anisotropy. As like refractiveness, as like some conductivity, electrical conductivity. It may be somewhere magnetism-like properties. So these properties are different in different directions. That is isotropy and anisotropy. So amorphous substances are always isotropic and crystalline substances are always anisotropic. What are the reasons behind that? Also, I told. यहाँ पे anisotropic मतलब why we get a different property in different directions. The reason behind that is particles are orderly arranged. So when measured in different directions, we get a different order. Here particles are not orderly arranged; they are random. So we get a different property in different directions. Different property in different directions. तो उसी कारण से इस तरीके से होता है. Also, everyone got this. That is called what is isotropy and what is anisotropy. Okay, so let's move to next. Next topic is nothing but we have to discuss some of the properties. That is polymorphism and isomorphism. There are two more important properties what we discussed, that is isomorphism and polymorphism. So isomorphs, and you can say polymorphs. So these are the two different things. These are two more important properties, isomorphs and polymorphs. Morphs मतलब structure. Morphs का मतलब होता है structure. ये भी इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर. आइसो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर
और पॉली मतलब डिफरेंट, पॉली मतलब डिफरेंट, ये तो हम जानते हैं. सो these are the combined words. So when we say iso मतलब सेम, सिमिलर, और मॉर्फ मतलब स्ट्रक्चर. सो सिमिलर स्ट्रक्चर ऐसा उसका मीनिंग होता है. और हियर यू कैन से पॉलीमॉर्फ्स मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऐसा उसका मीनिंग होता है. सो दैट इज व्हाट वी डिस्कस हियर. सो सेम एंड डिफरेंट इस तरीके से हम उसे देखते हैं. नाउ थिंग इज दैट these are very two important properties what we need to discuss here in solid state. Say for example, we have some substances as like sodium fluoride and magnesium oxide. So this is one of the categories. Second, you can say NaNO3 and CaCO3. These are the two substances. अब देखिएगा, sodium fluoride is a different substance and magnesium oxide is a different substance. Whereas here, sodium nitrate is a different substance and calcium carbonate is a different substance. When this solid crystallizes, when the crystallization for this substance occurs, these two substances crystallize in the same unit cell structure. It's very important thing that they have same unit cell structure, same unit cell structure, and here we have a different okay, matlab you can say different substances, okay, different substances but having a same unit cell structure are called, you can say, isomorphs. Substances are different. Sodium fluoride and magnesium oxide, these are totally different substances. But when they crystallize, these substances, different substances are same unit cell structure. Then these called, you can say, isomorphs. Or here hota hai, there is a same substance. There is a same substance which crystallizes in a different unit cell structure. Different unit cell structure. देखिए, it's very important. एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया मैंने कि सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. Though these are the two different substances, when they crystallize in the same unit cell structure. Or when we talk about this polymorphs, morphs मतलब structure, poly मतलब ion. Same substance crystallizes in a different unit cell structure. For example, say carbon. अभी हमें से सब लोग जानते हैं कार्बन को अच्छी तरह. Carbon is a single substance which crystallizes into different unit cell pattern, and that's why we got different substances as like graphite, we have diamond, and we have fullerene. These are the three different substances, or you can say simply allotropes. मतलब आप polymorphism को और polymorphs को allotropes भी कह सकते हैं. हम जानते हैं there are different allotropes of the carbon. Carbon के तीन allotropes होते हैं, graphite, diamond and fullerene. तो आज तक जिसे हम लोग allotropes कहते थे, वो allotropes are nothing but you can say polymorphism, because carbon is the substance, single substance जिसके तीन अलग-अलग substances मिलते हैं. मतलब graphite is also made up of carbon, is purely of carbon, diamond is also purely of carbon, and fullerene is also made up of the carbon. Then what's the difference between them? Fullerene, diamond, and graphite has totally different properties, though they are made up of purely carbon. Why they show the different properties? It's a big question. Why they show the different properties? The reason behind that, though this is the carbon, when it crystallizes as a solid, as a crystalline solid, it crystallizes into different unit cell patterns. It crystallizes into different unit cell. अभी आप बार-बार क्वेश्चन पूछेंगे, what is this unit cell? Unit cell का definition डिस्कस करना है. यूनिट सेल के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करना है हम लोगों को. यूनिट सेल सिंपली इज नथिंग बट यू कैन से इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर थ्रूआउट द क्रिस्टल लैट्स. किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, उससे ज्यादा छोटा स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, उसी को हम लोग यूनिट सेल ऐसा कहते हैं. हम देखेंगे आगे जाके डेफिनेशन देखना है. बस इतना याद है, जैसे कि हम लोग घर बनाते समय या कंस्ट्रक्शन लाइन में आपने देखा होगा कि घर जो बनता है वो ईंटों से बनता है. बाकी ठीक है, बराबर उसके अंदर आरसीसी जो कॉलम्स वगैरह होते हैं, स्टील होता है, वो अलग बात है. लेकिन दीवार बनाते समय दीवार के अंदर ईंटें यूज की जाती है, ब्रिक्स यूज किया जाती है. और सारे ब्रिक्स एक साइज की होती है,
उनका अरेंजमेंट अलग अलग रख के चाहे जितना जाइंट वॉल बनाया जा सकता है, बराबर है। तो जिस तरीके से ईंटें एक जैसी होती है उससे जाइंट वॉल बनती है, उसी तरीके से किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर होता है वो रिपीटिंग होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस, उसी को यूनिट सेल कहा जाता है। और कार्बन के अलैट्रॉप्स में इसका यूनिट सेल, इसका यूनिट सेल, इसका यूनिट सेल डिफरेंट होता है, तीनों का डिफरेंट होता है। दो द सब्सटेंस इज द सेम, कार्बन इज द सेम, बट व्हेन इट क्रिस्टलाइजेस it shows the different unit cell structures. It shows the different unit cell structures, and that is the thing what you can say polymorph. So simple definition is that whenever a single substance or same substance crystallizes into different unit cell pattern, that is called, you can say, polymorphs. Or here, whenever different substances crystallizes in the same unit cell pattern, substances अलग अलग है लेकिन unit cell एक जैसा मिलता है, these substances are called, you can say, isomorphism or isomorphs. In the phenomena is called isomorphism. So whenever different substances crystallizes into same unit cell pattern, that is called isomorphs. The phenomena is called isomorphism. And whenever single substance crystallizes into different unit cell pattern, single substance crystallization into different unit cell pattern, it is called, you can say, it is called, you can say, polymorphs or polymorphism. That is polymorphs or polymorphism. That is the structure what we get here. Also, everyone got what is isomorphs, what is polymorphs, what is isomorphism, and what is polymorphism. The phenomena is called isomorphism and polymorphism. समझ में आ रहा है आपको? So isomorphs मतलब simply allotropes, and here we have this isomorphs. The different substances present the same unit cell. Clear with this? So that is what we can say one of the important property. That is isomorphism and polymorphism. Okay. Now, again we have to discuss the classification of solids. Again we have to discuss classification of solids. पहला जो classification हो, that is crystalline solutions and amorphous solids, वो था. अभी हमें डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, सो वी आर हियर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. Crystalline solids. Now, these crystalline solids are classified into 4 categories. Which are 4 categories with that. So, number 1, we are here ionic solids or ionic crystalline solids or ionic crystals, ऐसा भी बोला जाता है. दूसरा, you can say network or covalent crystals. Then यहाँ पे आता है तीसरा, that is, you can say, molecular crystals या solids. And fourth one आता है, that is, you can say, metallic crystals or solids. So this is what we can see here. So be clear here. We have seen the classification of solids as a crystalline and amorphous solids. When we enter into the crystalline solids are again classified into ionic solids, also known as ionic crystals, covalent crystals or covalent solids, molecular crystals or molecular solids, and metallic crystals or metallic solids. ये इसका क्लासिफिकेशन देता है आपको. That is what we can say. अभी आपके बुक में आप इन्हें ionic crystals बोलो या ionic solids बोलो, इसका मतलब सिमिलर है. So मैं पढ़ाते अगर ionic solid कहता हूँ तो इसका सिमिलर, because it's a part of crystalline solids. Covalent solids are also called as network solids. Okay, network solid मुझे कहा जाता है. अभी we have to discuss कि इन्हीं के बारे में कि on what basis this classification is done. किस आधार पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है, खास करके when we talk about the crystalline solids, तो किस आधार पे ये क्लासिफिकेशन किया गया है. वहां पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है. पहली चीज है the constituent particles of which they are made up of. Constituent particles of which they are made up of. दूसरा, interparticle force of attractions उनका क्या है. And then rest, there are many properties what we discussed here. So what we'll do here, we'll discuss the properties here. Properties. तो अभी देखिए पहला प्रॉपर्टी आता है, that is, you can say, constituent particles. दूसरा आता है, that is attractive force.
attractive force. तीसरा, that is you can say softness or hardness. Fourth, conductivity. और फिफ्थ, अदर प्रॉपर्टीज. अदर कई सारे प्रॉपर्टीज आती है, उसके बारे में वो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है. तो अब देखिएगा, दिस क्लासिफिकेशन के अंदर दो बहुत ही मेजर फैक्टर आते हैं और बाकी सारे सप्लीमेंट्री अदर फैक्टर्स आते हैं. सबसे पहला आता है पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ व्हिच दे आर मेड अप. मतलब आयनिक क्रिस्टल्स कौन से पार्टिकल्स के बारे में मैंने कल भी कहा मैंने कि इस बुक के अंदर और इस चैप्टर के अंदर हम जब पार्टिकल वर्ड यूज करते हैं तो इसमें पार्टिकल का मीनिंग हो सकता है एटम, आयन और मॉलिक्यूल. ओके, सो इस बुक के अंदर जब हम वर्ड यूज करते हैं एटम, आयन और पार्टिकल, तो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो व्हेन वी से पार्टिकल कंसीडर कीजिएगा, इट मे बी एटम, इट मे बी आयन और इट मे बी मॉलिक्यूल. सो आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होता है, कोवेलेंट क्रिस्टल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर में इसमें क्या होता है, ये हमें डिस्कस करना है. एंड देन अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है between the particles, ये वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है. So as the name suggests, here ions दो टाइप के होते हैं. तो constituent particles may be cations or may be anions. Cations or may be anions. All the ionic crystals are made up of cations or anions. हम जानते हैं cations, anions. Cations are positively charged, anions are negatively charged. उसके पहले मैं कुछ एग्जांपल भी देना चाहूंगा आपको, बेटर एग्जांपल दूंगा. आयनिक क्रिस्टल का एग्जांपल दूंगा तो दैट इज यू कैन से NaCl, then MgCl2, so on. जितने सारे दुनिया भर के सॉल्ट आते हैं, सारे सॉल्ट आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर आ जाते हैं, आयनिक सॉलिड्स के अंदर आते हैं. कोवेलेंट सॉलिड की अगर बात करेंगे हम लोग, तो कोवेलेंट सॉलिड के अंदर आपका आता है डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरिन, क्वार्ट्ज वगैरह, ये सारे आते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल के अंदर. मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की अगर बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ammonia, these are the substances which comes under this O2 molecular crystals. और मेटलिक क्रिस्टल के अंदर बात करेंगे तो कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, जितने सारे मेटल्स आते हैं वो सारे मेटल्स आपके मेटलिक क्रिस्टल के अंदर आते हैं. तो पहले एग्जांपल दीजिएगा, एग्जांपल समझिएगा, उसके आधार पर थोड़ा सा बात करना इजी बनता है. मेटलिक क्रिस्टल के अंदर सारे मेटल्स, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे आते हैं जो मेटलिक क्रिस्टल्स कहा जाते हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, अमोनिया, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आते हैं. कोवेलेंट क्रिस्टल्स के अंदर और कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर डायमंड, ग्राफाइट, फुलरिन, क्वार्ट्ज, ये सब्सटेंसेस उसके अंदर आ जाते हैं. और आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर दुनिया भर के सारे सॉल्ट्स लाइक NaCl, KCl, MgCl2 वगैरह, ये सारे सॉल्ट्स के अंदर आ जाते हैं. अभी डिस्कस करना है ये कौन से पार्टिकल्स के बने हुए हैं, कौन से पार्टिकल्स के बने हैं. तो जैसे हमने देखा कि as the name suggests, ionic crystals are made up of cations and anions. When we talk about the covalent crystals are made up of, you can say, atoms. So इनका जो constituent particle होता है वो atoms होता है, because atoms comes together to form a covalent or crystalline solids. When we talk about the molecular solids, तो molecular solids के अंदर भी we have here atoms आते हैं, that is constituent particles are atoms, or simply you can say sometime molecules, क्योंकि atoms तब आता है that is monoatomic molecules, like the noble gases has the monoatomic molecules, so इसलिए atoms आ जाता है. अभी इसके अंदर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन के कई सारे मॉलिक्यूल बता सकते हैं. तो हाइड्रोजन has the molecular crystals और molecular particles. तो जैसे नाम आता है उसी हिसाब से molecules are the constituent particles. There are some exceptional substances like noble gases and all, where we have atoms as a particle, constituent particles. And when we talk about the metallic crystals, copper, iron, silver, magnesium, here that is you can say metal ion. तो इसका constituent particle होता है metal ion. Metal ion is its constituent particle. याद रखिएगा, this is the constituent particles. तो ये सबसे पहला classification है based on the constituent particles. All ionic crystals are made up of either cations or either anions or all together, no doubt. Then covalents are made up of your atoms. Here it is made up of molecules or monoatomic molecules, and these are made up of your metal ions. Generally cations होते हैं, metal ions. उससे ऊपर है. दूसरा जो पार्ट आता है that is interparticle force of attractions, attractive forces. यहाँ पे how cations and anions are held together. Cations are held together due to electrostatic force of attraction, that is called as ionic bond. Ionic bond. So here
सारे सॉल्ट्स के अंदर आयनिक बॉन्ड नाम का फिनोमेना पता होता है, हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड is a force of attraction between oppositely charged ions. Cation has the attraction for anion, anion has the attraction for cation. So that's why this has electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. Electrostatic force of attraction between oppositely charged ions, that is what you can say ionic bond. And here is what we can say covalent crystals. Covalent crystal can have that covalent bond. As the name suggests, here we have covalent bond. Covalent bond. Covalent bond. Covalent bond का definition हम अच्छी तरह जानते हैं. It is the bond which is formed by mutual sharing of the electrons between the two or more particles. So covalent bond is there. इनके बीच में electrostatic force of attraction is nothing but the covalent bond. Covalent bond. When we talk about the molecular crystals or atoms, इसके अंदर काफी different forces होते हैं. That is dipole interaction. Dipole interaction होता है. Dispersion forces होते हैं. Van der Waals force होता है. ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस की थी. इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज यू कैन से डिफरेंट फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं. सो हाउ दिस मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे अटैच होता है. तो उसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डिस्पर्शन, वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इवन इसके अंदर और एक आता है दैट इज यू कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्ड नाम का फिनोमेना भी इसके अंदर होता है, जो अलग टाइप के बॉन्ड है, बहुत वीक टाइप के बॉन्ड होते हैं लेकिन होते हैं. सो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर डिफरेंट इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई देता है. ये सारे फोर्स हमने 11th स्टैंडर्ड के स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस किए थे. डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां पे हमने डिस्कस किए. सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर इन्हीं में से तो कोई एक फोर्स प्रेजेंट होता है. ऐसा नहीं कि सारे होंगे. हो सकता है कि अमोनिया के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिले, और ये हाइड्रोजन के अंदर आपको वैन डर वाल्स फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स मिले. कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी आपको डिस्पर्शन फोर्सेस मिले. डायपोल डायपोल इंटरेक्शन HCl के अंदर आपको मिले, लाइक दैट. तो इस अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द मेटालिक क्रिस्टल्स, हियर मेटल आयंस आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड. यहाँ पे जो होता है एक मेटालिक बॉन्ड करके होता है, जो अलग बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड. अभी तक हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस किया था, कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था, मेटालिक बॉन्ड हमने डिस्कस नहीं किया था. शायद कहीं थोड़ा बहुत जिक्र आया होगा तो आया होगा, मैं बता दूंगा मेटालिक बॉन्ड होता है. मेटालिक बॉन्ड होता क्या है इसका? दिस इज द क्रिस्टल लैटिस. ये क्रिस्टल लैटिस होता है मेटल का, जिसके अंदर सपोज कि हम मानते हैं कि अगर सोडियम का क्रिस्टल लैटिस है या आयन का है, तो ये आयन का कैटायन होगा, ये आयन का कैटायन होगा, ये आयन का कैटायन होगा. सो दिस आर द आयंस के कैटायंस. ओके, आयंस के आयंस. तो ये आयंस के पार्टिकल्स है, कैटायंस है, Fe है. तो Fe इज आयन, इसके कैटायंस. और Fe होता क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. तो ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है, जिसके अंदर आपको आयन के मेटल आयंस मिलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड कर्नेल्स. जनरली मेटल फॉर्म्स पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल्स, तो पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल्स मिलता है. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, इसके अंदर जो होते हैं क्रिस्टल लैटिस में फ्री होते हैं, उन्हें कहा जाता है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, आल्सो कॉल्ड मोबाइल. तो डीलोकलाइज्ड और मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, जो आपको यहाँ पे मिलते हैं. नाउ थिंग इज दैट ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, ये जहां कहीं जाएगा उसके नियर बाय के पॉजिटिव एटम्स को अपने साथ रखेगा, उनके साथ अट्रैक्ट करेगा. सो दिस पॉजिटिव चार्ज कर्नेल इज अट्रैक्टेड विद दिस इलेक्ट्रॉन, इवन दिस अट्रैक्ट टू दिस एटम. दैट्स व्हाई दे आर हेल्ड टुगेदर. This is a very special type of bond called metallic bond. So metallic bond is a force of attraction in which positively charged metal ion is held together with delocalized or mobile electron within its sphere of influence. ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि यहीं पे रुकेगा. मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तो मेटल यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा. मेटल इस क्रिस्टल लैटिस में कहीं भी मूव हो सकता है इलेक्ट्रॉन. और इसलिए तो हम जानते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी क्रिस्टल लैटिस में मूव कर सकता है. तो ये इलेक्ट्रॉन जहां कहीं जाएगा, वहां के सारे पॉजिटिव कर्नेल्स को अपने साथ रखेगा, सारे पॉजिटिव कर्नेल को अपने साथ रखेगा. दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड. सो मेटालिक बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट इज आल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स मेटल आयन विद delocalized or mobile electron. Metal ion with delocalized or mobile electron is called as, you can say, metallic bond. तो सारे मेटल्स के अंदर आपको ये मेटालिक बॉन्ड दिखाई देगा. कॉपर हो, चाहे आयरन हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, सबके अंदर आपको ये बॉन्ड दिखाई देता है. दैट्स कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड. और मेटालिक बॉन्ड का डेफिनेशन मैंने बताया, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन व्हिच पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन
is held together with a delocalized or mobile electron within its sphere of influence. जहां जहां वो इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां के इनको वो अटैच करके रखता है, दैट्स कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट हियर इन द सॉइल. तो ये यहां पे मिल रहा है. क्लियर विद दिस? तो इस तरीके से पार्टिकल. नेक्स्ट होता है सॉफ्टनेस हार्डनेस की बात कर सकते हैं हम लोग. तो हम जानते हैं आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल. हार्ड एंड ब्रिटल. So these are hard and brittle. Like बिस्किट जिस तरीके से टूटता है इस तरीके से टूटते हैं, क्योंकि हम एनएसएल के क्रिस्टल जानते हैं हमारे घर के अंदर होते हैं. So these are called as hard and brittle. When we talk about this covalent crystals, these are hard or you can say hardest material. Molecular solids are soft, and this soft to hard. But some metallic crystals are soft, or some metals are soft, or some metals are hard. Sodium metal की बात करते हैं तो वो soft होता है, और आयन कॉपर की बात करते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं. सो इनके अंदर आपको सॉफ्ट से हार्ड काफी सारी रेंज मिलती है. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ऑल सॉफ्ट, whereas covalent crystals are hard or hardest. एंड इसके अंदर भी एक्सेप्शनली कुछ है जो सॉफ्ट मिलते हैं, एज लाइक ग्राफाइट वगैरह, और इसके अंदर आपको हार्ड एंड ब्रिटल मिलता है. ये होता है. कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ionic crystals in solid phase. When they are melt or when they dissolve into the water, they becomes good conductors of electricity. So non-conductor in solid phase becomes conductor in molten phase, or you can say dissolved phase. When we talk about this covalent crystals के अंदर the covalent crystals are conductors, but not good conductors. So conductors, because graphite is a good conductor, but diamond is not a conductor of electricity. Fluorine is somewhere conductor, but not. So may or may not work as a conductor, you can say. So you can say may or may not. So you can say may or may not. The reason behind that, it has a covalent bonding. और covalent bonding में क्या होता है कि electrons are packed for the bonding. Electrons are used for the bonding phenomena, and that's why free electrons or delocalized electronic chances would come होता है. And that's why exceptionally उनके अंदर कुछ होते हैं जो conductors होते हैं. So electrons are not free. In order to show the conductivity, electrons should be free. Molecular solids are again non-conductors. So ये है non-conductors, no doubt. And these are हम जानते हैं कि good conductors. So these are good conductors of heat and electricity, because हम जानते हैं all metals are good conductors of heat and electricity. One more important thing regarding the metal, जो आप school life से पढ़ते हो, metals are ductile, metals are malleable, and metal has the lustrous property too. So metals के बारे में, metals are having the malleable property, having the ductile property, and they have the lustrous property. ये हम अच्छी तरह जानते हैं that regarding the metals one here. So this was also clear. Then we can have here MP or BP. MP और BP की बात करते हैं, that is melting point and boiling points की अगर बात करते हैं. So ionic crystals are having high melting point, boiling points. Covalent crystals are exceptionally high. मतलब इनका melting point 300 से लेकर 4000 तक होता है. Melting points 4000 तक होता है. Diamond है जो इसके अंदर आता है, diamond has the melting point almost 3500 degrees Celsius. तो ये होता है. Here you can say molecular solids are having low melting point, boiling points, -276 almost to 300 तक होते हैं. इनके होते हैं. और metals are having again high. ये भी वापस 4000 तक होते हैं उनके melting point, because they are being the metals. So that is what we can say here. So that is melting point and boiling point. So these are the properties of this, you can say. Ionic crystals or ionic solids, covalent solids, molecular solids and metallic solids. इसके अलावा इनके अंदर और कुछ डिटेल्स की बात आते हैं, कंपैरिजन के थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, डिपेंड ऑन द डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड, इसके आधार पर कुछ कैटेगरीज किए जा सकते हैं. When we talk about the covalent crystals, diamond, graphite, fluorine has to be studied well, because diamond has totally different properties, graphite has totally different properties, and fluorine has different properties. Fluorine is one of the allotrope of the carbon, जिसके अंदर मॉलिक्यूल C60 से लेकर आगे होता है. कार्बन 60 से लेकर आगे उसका मॉलिक्यूल होता है, that's why it has different properties for that. ये हमें इसके अंदर मिल जाता है. So onwards तो इसी तरीके से होता है. मेटालिक सॉलिड के अंदर तो मैंने बताया malleable, ductile and having the lustrous property. This shows the property for this one. So this is what we can say. Classification of crystalline solids. Clear? So we have seen first classification of solids as crystalline solids and amorphous solids, and here we have seen classification of crystalline solids as ionic solids, covalent solids, molecular solids, and metallic solids. And this classification is mainly based on the constituent particles of each made up of and the interparticle force of action. These are the two major points which differentiate them.
बाकी रेस्ट काफी सारे पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि दे हैव द डिफरेंट क्लासिफिकेशन, नो डाउट एट ऑल. Now, furthermore, we have to discuss, that is, we have to start with a unit cell. The reason behind that, हमने कई बार यहाँ पे इसके अंदर भी टॉपिक आ जाता है कि यूनिट सेल. इस चैप्टर के अंदर amorphous solids हमें डिस्कस करने नहीं है, हमें डिस्कस करने हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स और कोवेलेंट सॉलिड्स. और कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर जो हम आते हैं, दैट इज व्हाट कैन से, तो उसी के अंदर हमें डिस्कस करने हैं यूनिट सेल, जिसके मैंने अभी डेफिनेशन बताई. किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो उसी के अंदर रिपीट होता है. जैसे कि हम बायोलॉजी के अंदर देखते हैं कि बायोलॉजी में भी सेल्स होते हैं. एवरी ऑर्गेनिज्म हैज द सेल्स एंड सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ऐसा बायोलॉजी में डेफिनेशन देखा आपने. और सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो जिस तरीके से ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोलॉजिकली सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से किसी भी सॉलिड के अंदर स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैन से यूनिट सेल. उसी यूनिट सेल कहा जाता है और उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर. टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय.